Okay, we are live for We Wow Women. Welcome to We Wow Women, a session. This is the Saturday special, which we always have. And today we are here with the youth of tomorrow. Wow. It gives me the energy which when I see these young faces with the correct motto, it gives a feeling of pride, right? Because I am a mother as well. मैं भी एक माँ हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा प्राउड फील होता है जब मैं इतने अच्छे और इतने इस तरीके से डेडिकेटेड हमारे यूथ को देख सकती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ बेहतरी की तरफ कल बढ़ रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट वी नीड फॉर टुमारो, द बेस्ट tomorrow for us with the youth, the best youth. So the topic for today is youth and technology. और इस टॉपिक पे सबसे अच्छा अगर कोई बोल पाएगा तो वो है youth itself, the youth of tomorrow. So we are presenting here the youth, and they would be presenting the topic for themselves, the youth with the technology. So today we would have the presenters, and the first presenter we have is वासवी शर्मा. मैं वासवी शर्मा को जरूर बुलाना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत डेडिकेटेडली बहुत टाइम से ऑन पैसिव को एक विजन दे रही हैं टू द यूथ, स्पेशली टू द यूथ, एंड what she knows and what she is learning from ONPASSIVE. She's trying to deliver the best to the world and especially to the youth. She is inspiring not only herself, but the youth. Many youth are following her today, and we can see the faces because they would be speaking for the first time. And I would let you know what all they have already achieved and done to ONPASSIVE. So starting with Vasvi Sharma. Vasvi, over to you. Thank you so much, Rekha ma'am. Really, thank you so much for giving me this opportunity to represent, to speak on the topic youth and technology. And of course, first of all, I would really love to say ONPASSIVE namaskar to each and every brand ambassador. और जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हमें अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं या जो हमें इन फ्यूचर देखेंगे या फिर जो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है उनको भी सबको. एंड ऑफ कोर्स जो आज हमारे साथ यूथ हैं, रियली थैंक यू सो मच रेखा मैम जो आपने ये स्टेप लिया है यूथ को आगे लाने का, यूथ स्पेशल सेशन करने का. दिस रियली मीन्स अ लॉट एंड इट इज रियली वेरी अप्रिशिएबल. एंड जितने भी यूथ आज फॉर द फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या जो पहले भी जुड़े थे उन सबका मैं हम देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इन सबका भी वेलकम है. एंड ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा हम टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज यूथ एंड टेक्नोलॉजी. जो आज का हमारा टॉपिक है यूथ एंड टेक्नोलॉजी. एंड हम सब जानते हैं कि वी ऑल नो दैट यूथ इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ. इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन्स लाइफ. टेक्नोलॉजी आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड यूथ और टेक्नोलॉजी को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा यूथ ही हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे सोशल मीडिया साइट्स हो, है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वेदर इट इज सोशल मीडिया साइट्स और इंटरनेट. वी ऑल नो दैट यूजुअली क्या होता है टेक्नोलॉजी. एंड बिकॉज ऑफ ONPASSIVE, वी आर इन ONPASSIVE एंड आई हैव लर्नड अ लॉट. जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर हमें, वी आर कनेक्टेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना. हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानने का जो मौका मिल रहा है अभी, हर एक चीज को समझने का. वेदर एक बात मैं और कहना चाहूंगी, जितने भी इंडियंस यूथ यहाँ पर हैं, तो चाहे इंटरनेशनली है चाहे इंडियंस है, नेशनल है, उन सबको मैं कहना चाहूंगी दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर नेशन, राइट. वी हैव टू रिप्रेजेंट एज अ ब्रांड एम्बेसडर, वी हैव टू रिप्रेजेंट ONPASSIVE too, but with the confidence. और वो confidence just a minute. ये भी किसी का माइक अनम्यूट है, सो थोड़ी okay. Yes, thank you. And moving ahead, yes, अगर हमें confidence कैसे आता है, हमें जब when we have knowledge about a particular topic, जब हमें knowledge होती है कि हाँ ये चीज ऐसे है, तो हमें
एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, हम चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, है ना. सो वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी फीचर्स को समझने का. अगर मैं ओ कनेक्ट की बात करूं, रिसेंटली अभी ओ कनेक्ट ही रेवोल्यूशनरी टूल है. वी ऑल नो ओ कनेक्ट इज अ रेवोल्यूशनरी टूल. सो अभी हम ओ कनेक्ट भी यूज भी कर रहे हैं, है ना. जो उसमें जो फीचर्स हैं हम सबको पता है कि क्या है. अभी कोई उन पर बात करने के लिए, मतलब समझाने के लिए भी आई डोंट थिंक जरूरत है, क्योंकि हर एक अच्छे से फीचर्स पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये फीचर क्यों है, कैसे है, क्या खासियत है ओ कनेक्ट की, है ना. ओ कनेक्ट क्यों इतना इतना हम सबको पसंद आ रहा है. सो दिस इज द थिंग. एंड ओ जैसे अभी यहाँ पर आई थिंक रिया जी हैं एज ए यूथ, जिन्होंने काफी ज्यादा उनको एज काफी ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाया है दिस इकोसिस्टम एंड ऑल. सो रियली हमें क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उन्हें खुद भी नॉलेज थी, है ना. उन्हें खुद भी नॉलेज थी, तभी वो दूसरों को एक्सप्लेन कर पाए. सो दिस इज द थिंग. एंड मूविंग अहेड, जो टॉपिक है हमारा यूथ एंड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की बात करूं, जैसे यूथ है ना, मैं एक एग्जांपल दूंगी. वन ऑफ माय कजन, सो उनका क्या था, उसका क्या था स्टार्टिंग में कि यूथ, देखो टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी, हम सब जानते हैं. लेकिन इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें किस वे में किस चीज को लेना है ना. वेदर वी हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे और वी हैव टू टेक इट इन अ नेगेटिव वे. क्या है, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं. मैं एक एग्जांपल दूंगी, है ना. मेरा कजन ब्रदर है, छोटा है वो काफी, एंड उसे कार्स के बारे में बहुत नॉलेज है. कैसे है, टेक्नोलॉजी, है ना. इंटरनेट पर सब कुछ सर्च करना, पूछना, एंड जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बातें करना. तो कहीं ना कहीं घर आकर हमारे पास क्या सोर्स होता है, अपना फोन लो, सर्च करो और उसके बारे में और जानो, है ना. वी हैव दिस. तो उसको कार्स के बारे में इतनी नॉलेज है जितनी मैं कहती हूँ कि मुझे भी नहीं है. मुझे उससे सुनने को मिलता है कि इस कार का ऐसा है वैसा है. किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. एक डिसएडवांटेज क्या है, दैट वी कहते हैं ना, हम काफी ज्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, एडिक्शन सोशल मीडिया का. कि तो उससे क्या होता है, किसी की बात करूंगी तो काफी छोटे थे वो, लेकिन यूथ ही थे, बट स्टार्टिंग इन द 12 years. एंड दे वर लाइक कि जो सोशल मीडिया कहता है वो सच है, और जो मुझे आगे पीछे जो मुझे लोग कह रहे हैं ना, वो शायद मैं थोड़ा सोचूंगा उस बारे में, है ना. जो सोशल मीडिया मुझे बता रहा है ये सच है. हो सकता है किसी ने जो रियल लाइफ में जिसने उसे समझाई होगी कि नहीं ये चीज ऐसे थी, तो बाद में अगर सोशल मीडिया पे कहीं दिख गया ना कि हाँ ये चीज ऐसी थी, तब वो बिलीव करेंगे कि हाँ ये चीज ऐसी ही थी. आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी. सो मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं इस टॉपिक इन लाइनों पर जाऊंगी, बट मैंने समझाने की कोशिश की. एंड टॉपिक पर मैं ब्रीफली बात करूंगी जरूर. सो ये टेक्नोलॉजी है. एडिक्टिव हमें नहीं होना है. यूथ का बेसिकली क्या है, सोशल लाइफ एंड रियल लाइफ में देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सोशल लाइफ एंड रियल लाइफ. जो सब कुछ सोशल लाइफ में होता है, जैसे हम इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लें, चलो वो नहीं लेते हैं, मैं बात करती हूँ. मैन इज मेड अप ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस, राइट. माइंड इज मन एंड इंटेलिजेंस इज बुद्धि. सो व्हाट इज इट, माय इंटेलिजेंस इज टेलिंग मी, मैंने एग्जांपल एक बार पहले भी दी थी, सो आई थिंक अभी यूथ स्पेशल है तो ये देना बेटर सूट करता है. So my intelligence is telling me to, do hard work and go through those stuff, to hard work and achieve good marks, right? My intelligence knows what is right. Okay. So yes, my intelligence knows that what is right and what is wrong. But this mind, it is continuously telling me to scroll over Instagram and YouTube and everything. वो मुझे कह रहा है कि मैं YouTube पर शॉर्ट्स देखूं, इंस्टाग्राम पर रील्स देखूं, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वो देखूं, क्योंकि माइंड अनकंट्रोल्ड है. वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड, है ना. वो कैसे हो सकता है, बहुत सारी बहुत सारी चीजें हैं. कुछ मेडिकेट करके मेडिटेशन करके कर सकते हैं, या कुछ सबके अपने अपने, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर इनक्रेडिबल, राइट. हाउ? बिकॉज वी आर यूनिक. इनक्रेडिबल मीन्स यूनिक, अतुल्य, है ना. वी ऑल आर इनक्रेडिबल. सो दैट इज द थिंग. सबके डिफरेंट वेज हैं चीजों को समझने के, एंड सबके डिफरेंट वेज हैं चीजों को एक्सप्रेस करने के. अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ले लूं तो मेरी अलग होगी, किसी और की अलग होगी. दिस इज द थिंग, एंड वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड. टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं. अगर मैं ऑन पैसिव की बात करूं, यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना समझने को मिल रहा है ना. हर एक चीजों को एक जैसे मैं बात करूं ओ कनेक्ट में जो एक फीचर है, ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, right? OConnect is coming with a feature auto language translator.
और वो किसकी मदद से हो रहा है? इट इज विद द हेल्प ऑफ NLP. NLP क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना? तो हमें इन चीजों को समझने का मौका मिल रहा है बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव. सो यही चीजें हैं. अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. एंड यूथ अगर मैं चिल्ड्रन की बात ले लूँ, स्टार्टिंग से अगर वो इंटरनेट पर हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जो दैट विल बी हेल्पफुल इन देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड एवरीथिंग. मतलब टाइम से पहले वो चीजें नॉलेज गेन कर सकते हैं बहुत सारी चीजों के ऊपर. दिस इज द थिंग. एंड आई होप, रेखा मैम, आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम. No, 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 no. You are the presenter. You can take as much time as you want. Okay, but still I will not take much time because हमारे साथ और भी बहुत यूथ हैं, उनके पास भी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा बाकी सारे यूथ को नॉलेज देने के लिए. सो मूविंग अहेड, मैं अभी इतना ही बोलूंगी. टेक्नोलॉजी से हमें बेनिफिट्स बहुत हैं, बट स्टिल हमें एडिक्टिव नहीं होना है ना? एडिक्टिव में टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ. वहां पर हमें एडिक्टिव नहीं होना है ना? कि मतलब यूजुअली क्या होता है, इससे क्या होता है, कुछ यूथ इनसिक्योर भी फील करते हैं दैट मे बी ये ऐसे हैं तो मैं ऐसा हूँ, शायद मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, या है ना, या कर सकता हूँ. तो ये सब नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं माइंड में. तो स्टिल अगर हम पॉजिटिव स्टफ देखें वहां पर, तो क्या होता है कि हाँ, ये चीज ऐसी है, मुझे ऐसे सीखनी है और मुझे आगे बढ़ना है. द बिगेस्ट प्रेशर यूथ फेस टुडे इज टू बिलीव इन देमसेल्फ, राइट? तो वी हैव टू बिलीव इन अस, बिलीव करना, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड नेवर टेक कुछ भी चीज जैसे क्रिटिसिज्म मैं कह रही हूँ, कभी भी उसे पर्सनली नहीं लेना है. बिकॉज इससे एज हम फीडबैक ले सकते हैं ना. जैसे क्रिटिसिज्म, आई थिंक, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको कह रहे हैं कि शायद तुम ये ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम रहने दो, है ना? लेकिन हम उसे अगर फीडबैक की उससे लें कि शायद ये, अगर हम फीडबैक के वे में लें, नेगेटिव नहीं लेना, फीडबैक वे में अगर हम लेंगे कि हाँ, शायद उन्होंने मुझे ऐसा कहा है, मे बी कुछ कहीं ना कहीं मुझे खुद पर भी कहीं ना कहीं है कि मुझे खुद पर काम करना होगा. आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. ये पार्ट्स हैं, ये फ्लॉज हैं, तो मे बी मैं इन पर काम करूं, सो आई वुड बी एबल टू डू इट. नेगेटिव ले लेंगे तो हम वहीं पर चुपचाप बैठ जाएंगे, नहीं हम नहीं कर सकते. यूजुअली यूथ के साथ ये होता है, बहुत सारी थॉट्स आती है माइंड में. इवन हम यूथ हैं तो एक दूसरे को समझना इजी है, राइट? बहुत सारी थॉट्स आ जाती है माइंड में कि शायद हम ऐसा है वैसा है. ऐसा नहीं सोचना. वी हैव टू बी पॉजिटिव in each and every situation, right? So technology, just give me a minute. Actually, I'm signed out from my Gmail right now. Okay, yes. Am I audible, Rekha ma'am? Okay. So moving ahead, जो youth technology से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, we all know. And एक और बात अगर मैं करूँ, early access to technology teaches the digital, literacy skills that children will need in future. ये बात मैंने पहले ही कही थी, but I was continuing in Hindi. So that is the thing. And schools and adults, youth and technology side by side हमारे लिए, कहते हैं ना, मैंने कहीं पर पढ़ा था that we call it gen tech. शायद ऐसा ही कुछ है, मुझे याद नहीं रहा, काफी दिनों पहले पढ़ा था. So I think ऐसा कुछ है. क्यों है? क्योंकि अभी ज्यादा पॉपुलेशन भी यूथ की है, तो वो ज्यादा टेक्नोलॉजी को, चीजों को, चेंजेस को ग्रैब कर सकते हैं, है ना? उन्हें पता है. जैसे अगर हम सपोज किसी गेम को ले लें, है ना, कोई हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू इट, हम खुद ही सीख जाते हैं कौन सी चीज कैसे करनी है ना? यूथ की बात नहीं कर रही हूँ, एल्डर्स भी हैं, मतलब वो खुद ऐप ओपन करते हैं, उनके खुद ही फीचर्स पता चल जाते हैं, ये चीज हमें ऐसे करनी है. सो यही चीज है. एंड जो स्टार्टिंग से मैं कहते आ रही हूँ, हमें एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है. टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर. एंड आई होप मैंने टॉपिक पर ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है. एंड थोड़ा बीच में वो हो गया था बिकॉज मैं जीमेल से आउट हो गई थी, आई थिंक सम इश्यूज, सो थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो रही थी बीच में. सो ओवर टू यू रेखा मैम, थैंक यू सो मच. एंड अगर कुछ ऐड करने के लिए होगा, सो आई विल ऐड इट इन द एंड. Wow, Vasvi, wow. And the reason why we are coming up with these topics is because the youth is growing. And as Vasvi said, Vasvi ने जैसे भी बोला है कि addiction is, affect the one major reason that the youth is affected to technology, or the side effect of technology. We have to overcome that as well. We have to look both phases of the technology, because
like the coin, the technology have both the phases. We can take it towards the negative and spoil ourselves. We can take it towards the positive, and we can grow with the technology. Very well said, Vasvi. And such mein बताऊं तो that's the reason, you are the face now. You are one of the faces which the youth will remember. And एक ड्रीम होता है ना सबका कि मुझे वासवी जैसा बनना है, तो वो समय जल्दी आ जाएगा. Next, moving on to Kashish Singh, and वो भी बहुत knowledge रखती हैं, though she came from coaching and rushed to this webinar, not the webinar but this session. और कशिश के बारे में बताऊं तो she has not yet completed her schooling, she is still in school. तो बहुत knowledge रखती हैं, तो हम उनसे जरूर जानेंगे what she understands with youth and technology. Before moving to Kashish, we have a birthday girl. उनको birthday wish करके हम सब उनसे कहेंगे कि yes, you can have the celebration run at home and cut your cake. Kanta Mani ji, happy birthday to you. From every part of the world, they would start wishing you, and you deserve the wishes as well, because this is what is being taught in ONPASSIVE, ki celebrate together and be happy together. It makes a difference. So Kantamani ji, aap kuch bolengi? Yes, thank you so much, ma'am. My voice is clear, ma'am? Yes. Okay, just a minute, ma'am. मैम आप देख पा रहे हैं ये मेरा केक यहाँ पे रेडी हो रहा है. एक मिनट मैम, फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ. Just a minute. Wow, together you both are looking awesome. फर्स्ट टाइम विजिटर है मैम यहाँ पे, और दिख पा रहा है कि नहीं मेरा केक है. एक्चुअली में बैक कैमरा में कर नहीं पा रही. एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट मैम. Oh wow, this is beautiful. Congratulations to you. एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम है ना, मेरे बच्चे लोग को ना क्या बोलते हैं, एक सेकेंड. हाँ, फर्स्ट टाइम मैं मोमबत्ती सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, बट इन लोग है ना मुझे ना चिढ़ाने के लिए मेरा डेट ऑफ बर्थ सब इन लोग लगा के रखे हैं. देखिए, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल. और मैं सच में खुश हूँ आज आप दोनों को साथ में देख के. या मैम फर्स्ट टाइम हम लोग फैमिली टुगेदर मेक्स अ डिफरेंस इन द बिजनेस. ये मैं हर प्लेटफॉर्म में कहती हूँ, और फैमिली को आना जरूरी है. यस यस. बाय चांस मुझे आपके सेशन में मैम आज सेलिब्रेट करने का मौका मिला फर्स्ट टाइम. हालांकि अभी इनक्रेडिबल में बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ, बट केक का सेलिब्रेशन शायद आप ही के सेशन में होना था, तो मैं केक कटिंग कर रही हूँ मैम. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy 43rd birthday to you. She's a mom. She's also a mom of a daughter and a son, and that is incredible mother. Thank you so much, ma'am, and thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Continue ma'am session. I'm watching. Thank you. Yes. Next हम बढ़ते हैं कशिश की तरफ. कशिश, over to you. Thank you so much, ma'am. First of all, thank you so much for those words, kind words. सभी को मेरी तरफ से good evening, and those who are listening us and watching us, thank you, and सभी को namaste. I am Kashish Singh from Bihar, and I am 17-year-old and a proud brand ambassador. And we are here on We Wow Women. And here the most wonderful topic we have got today, youth and technology. And this topic and this platform we have got because of Rekha Makhan ma'am. So thank you ma'am, and
and welcoming all sweet and young youths here. And I am seeing new faces here, and I am so quite मेरे को अच्छा लगा देख के, बिकॉज मैं और वासबी दी ही रहते हैं, तो न्यू फेसेस देख के लग रहा है कि या वी आर डूइंग समथिंग एंड आगे आ रहे हैं यूथ्स. सो गोइंग विथ माय टॉपिक, द साइंस ऑफ टुडे इज टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेक्नोलॉजी. देयर इज नथिंग लाइक दैट कि technology is just a tool in terms of getting the kids working together and motivating them. The teacher is the most important. We can say that. ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें नेगेटिव देखना है टेक्नोलॉजी के बारे में या सिर्फ पॉजिटिव देखना है. बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी कैन बी ग्रेट टूल फॉर द यूथ, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट. It also allows for communication with others, connecting people from different parts of the world. हम सभी देख सकते हैं. And now on which platform we are, it is also a technology. हम अभी Zoom पे जुड़े हुए हैं, एक बोलते हैं ना इतने दूर बैठे हुए हैं सब, लेकिन जुड़े हुए हैं because of technology. Zoom and O Connect, हम सभी यहाँ टेक्नोलॉजी की वजह से है. हाँ, इसके यूजेस भी हैं, इसी की वजह से तो हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितनी सारी इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं. बोलते हैं ना देयर आर मेनी एडवांटेज फॉर द यूथ यूजिंग technology, including access, but however there are also disadvantages such as addiction, cyberbullying, exposure to inappropriate content. बोलते हैं ना आजकल के यूथ इनसिक्योर भी हो रहे हैं, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग कि थोड़े से वो डीमोटिवेट होते हैं बिकॉज कुछ बैड एलरिंग देख के. तो देयर इज नथिंग लाइक दैट. एंड डीमोटिवेट होना फर्स्ट थिंग उनके लिए सही नहीं है. बोलते हैं ना अगर मैं पूछूं दिस क्वेश्चन, व्हाई इज डिफिकल्ट फॉर ओल्डर पीपल कांट मेक इट सिंपलर. टेक्नोलॉजी ओल्डर पीपल के लिए उतनी सिंपलर क्यों नहीं है जितनी आज की टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हम जैसे यूथ्स के लिए. तो वी हैव अ एप्रोप्रिएट आंसर कि ओल्डर पीपल मे फाइंड technology difficult to use because they did not grow up with it. And us, हम लोग सब इसी के साथ बड़े हुए हैं, इसके साथ बोलते हैं ना एक तरह से कि खेले हैं, और उन्हें अभी खेलने में टाइम लगेगा. there is nothing like that. There are many resources available to help them, जिसके वजह से सब सीख रहे हैं. क्लासेस, ट्यूटोरियल्स, हम जितना टाइम इसको नहीं लेते हैं उससे ज्यादा सीखने पे नहीं, हम लोग एंजॉय करते हैं. वो सीख रहे हैं बिकॉज दे आर मैचिंग दैट एंड दे आर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन देयर सेल्फ. तो दिस ऑल वी हैव टू अप्रिशिएट. बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी इज जस्ट नॉट अ टूल, वी हैव टू यूज इट फॉर आवर वर्किंग एंड एवरीथिंग. बोलते हैं ना इफ यू मैरी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विथ क्वालिटी in reaching content, that's a circle of win. We are going to win that path. We all have O Connect and we are using that trials. And I had heard ma'am saying about Ria ma'am, that she had connected many people to us. That's the power of technology कि O Connect से इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, वो एक फ्यूचर बिल्ड कर रही है हमारे यूथ के लिए. बोलते हैं ना कि हम सभी एक फ्यूचर तो नहीं क्रिएट कर सकते हैं यूथ के लिए, लेकिन हाँ अपने यूथ को क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. बोला जाता है अगर किसी को एक मछली दी जाए तो वो उसका एक दिन का पेट भर सकता है, लेकिन यदि उस मछली का पकड़ने का सिखाया जाए तो उसका जिंदगी भर पेट भरेगा. इट इज अ एग्जाम्पल. बस ये बोलते हैं ना कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली वेपन होती है. अगर आप उसका सही उपयोग करें तो यू कैन क्रिएट दैट वर्ल्ड. इट्स नॉट अबाउट इमेजिनेशन. व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी डज, इट क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज टू डू अ जॉब दैट कस्टमर्स वांट डन. ये टेक्नोलॉजी तो है जो हमें डेली न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पीपल्स एंड न्यू इंफॉर्मेशंस दे रही है. अगर हमें पता ही नहीं हो तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे. बोलते हैं ना ह्यूमंस आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ टेक्नोलॉजी. हमें ये याद रखना चाहिए. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना
माइंड जो हमारा है, हम वो उसे कंप्यूटर की तरह सोचे, उसे अपनी तरह सोचा थिंकिंग दे रहे हैं, ये ठीक है। टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। वी डोंट हैव टू क्रिएट दैट इट इज अवर टीचर। हमें समझने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी कैन बिकम द विंग्स दैट will allow the educational world to fly further and faster than ever. If we allow it, we are doing good. बोलते हैं ना, हमने स्कूल में जो सीखा है वो सब भूलने के बाद भी जो याद रहता है वो इम्पोर्टेंट है, और उसे ही शिक्षा कहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये यूथ के पास एबिलिटीज है कि जब उन्हें टेक्नोलॉजी इतनी एप्रोप्रिएट वे में मिली है तो उसका राइट पाथ पे यूज कर रहे हैं कि गलत गलत पाथ पे यूज कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फलता है। तो अगर हमें पता ही नहीं रहेगा व्हाट वी आर यूजिंग, अगर हम सिर्फ उसका रॉन्ग वे में यूज करेंगे तो क्या ही फायदा उस टेक्नोलॉजी का। बट एज आई कैन सी दैट आई एंड जितने भी यूथ यहाँ प्रेजेंट है, वी आर यूजिंग अ राइट वे। तभी तो हम सभी जूम पे है, यहाँ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। एंड बोलते हैं ना, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। सो व्हाट वी हैव टू यूटिलाइज दैट। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि कोई बड़ा ब्रांड आपके पास आने पर मजबूत हो जाए। इनफैक्ट आप खुद एक ब्रांड बन जाओ ना। इट्स अबाउट यू। बस मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, सोचो मत, शुरुआत करो। आई मीन टू से दैट स्टार्ट। डोंट प्रॉमिस, वादा मत करो, साबित करके दिखाओ, बताओ मत, करके दिखाओ। एंड वी ऑल आर डूइंग दैट। अगर मैं यूथ हूँ अभी तो मैं टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं उस चीज को साबित कर रही हूँ। एक छोटा सा कॉर्टेज भी बोलना चाहूंगी, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जस्ट ट्राई इट ना गाइस, वी ऑल आर हेयर of because of technology. We all are practicing and trying our best because हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। एंड बोलते हैं ना, अगर आपको सब चीज सही पाथ, सही टीचर्स, हमारे लीडर्स जितने हमें मिले हैं, ये यूं ही थोड़ी मिले हैं हमें आगे जाने के लिए। एक न्यू पाथ, एक न्यू वर्ल्ड का क्रिएशन है। जब हम मानते हैं कि ONPASSIVE एक फैमिली है तो हमें आगे आना चाहिए। वी ऑल आर यंगस्टर, द फ्यूचर ऑफ टुमारो। अगर आप एक इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, मतलब आपको चेंज करेगा या आपका फ्यूचर सही होगा, तो खुद को आईने में एक बार देखो तो यू आर दैट पर्सन। आप खुद को चेंज नहीं करोगे तो आपका फ्यूचर कैसे बदलेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मैंने ऑन पैसिव पे बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल सुना है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है, तभी तो हम सभी यहाँ ऑन पैसिव पे एक साथ हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। एंड दैट्स द प्रूफ ऑफ अस, वी ऑल आर दैट प्रूफ। तभी तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है और हमें एक राइट वे, एक राइट मंजिल की तरफ ले जा रहा है। मैंने जैसा बोला था, वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर आवर यूथ, बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। और हम वही कर रहे हैं, बिकॉज हमें समझने का जरूरत है कि यूथ इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर बट एज इज अ वर्क ऑफ आर्ट। आप किस एज पे ये चीज को समझ जाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। हम सभी ऑन पैसिव पे, तो ये समझना आई थिंक मुश्किल नहीं होगा कि हम अपने एज को समझ गए हैं, हम अपने टाइम को समझ गए हैं। इन यूथ वी लर्न, इन एज वी अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं, आगे कैसे बढ़ रहे हैं। A brave, frank, clean-hearted, courageous, and aspiring youth is the only foundation on which the future can build the nation, or we can build our future, man. We have to see that. बोलते हैं ना, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप दूसरे को चाहते हो कि उसमें ये चेंज देखो, तो पहले खुद को चेंज करो, तभी वर्ल्ड में आपको वो चेंज देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑल अबाउट इज टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी हमें यूं थोड़ी मिली है तो यूज करने का जरूरत है। ऑल थिंग
हम हर जगह टेक्नोलॉजी है, वी ऑल आर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी। बोलते हैं ना, थ्रू टेक्नोलॉजी योर गिफ्ट्स, योर लीडरशिप, पर्पस, नन ऑफ इट इज अबाउट यू। हमें कोई भी चीज यूं ही नहीं मिली है। इंस्टेड अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस इज अबाउट सर्विंग अदर्स। टेक्नोलॉजी मिली भी है तो हमें मिली है, हम दूसरे को सर्व करेंगे। और कहा है हमारे मम्मी पापा हैं, उन्होंने हमें चलना सिखाया है, उठना बैठना लिखना पढ़ना। फर्स्ट टीचर हमारे मम्मी पापा हैं। अगर उन्हें हल्का सा कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं आता है तो आप बता सकते हो, आप यूटिलाइज करोगे अपने टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को उनके साथ शेयर करोगे, तो साथ में आप आपकी फैमिली मेंबर्स जितने भी ब्रांड एम्बेसडर या जो भी लोग हैं, साथ में टेक्नोलॉजी का यूज करके आगे आ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आजकल के यूथ बैड डिस्ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया से अट्रैक्ट होके बैड थिंग्स कर रहे हैं, उससे अच्छा इसको यूटिलाइज करो गाइस, एंड आओ कम अप एंड डू समथिंग। खुद भी आओ, पेरेंट्स फैमिली सभी के साथ, बिकॉज हमारे हाथ में फ्यूचर है, हमारा भी और दूसरों का भी। तो हमें देखना है कि करना क्या है। इट्स अबाउट गाइडिंग दोज हु नीड अवर टैलेंट्स। तो हमें जब मिली है टैलेंट, गिफ्ट मिला है, अभी हम यूथ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज मिली हैं, एक पर्पस मिला है, एक सही पाथ मिला है, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए। डू ऑल द गुड यू कैन, जो गुड आप कर सकते हो वो करो, बाय ऑल द मीन्स यू कैन। आप जैसे कर सकते हो वैसे करो, इन ऑल द वेज यू कैन, आप सभी तरीके से कर सकते हो, इन ऑल द प्लेसेस यू कैन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यही के लिए ये चीज बोल रही हूँ, ऑन पैसिव पे आपके सुनने के लिए बोल रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है, मैं मानती हूँ कि कैसे इसको यूटिलाइज करना है, बट वी हैव टू डू दैट। इसको सब जगह करना है, एट ऑल टाइम्स यू कैन, at all people you can, as long as ever you can. We have to change that. वर्ल्ड चेंज करते देखना चाहते हो, खुद को भी चेंज करो, टेक्नोलॉजी का सही यूज होगा। आई नो अभी हम यहाँ 5-6 लोग हैं youths, but we can say here many new faces. As we are as I am seeing here new faces, I want to see more and more, and I know you can also see that. And I am very thankful for Ria ma'am that I had learned and heard, and that was a, well, then 3 magical words that was like that: the human spirit must prevail over technology. ये हमारे अंदर का स्पिरिट तो होता है जो हमें आगे ले जाता है। बोलते हैं ना, द रियल पावर ऑफ एन अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी इज दैट दे लेट वर्सेस लर्न इन वेज दे अरेंट अदरवाइज पीपल पॉसिबल और प्रैक्टिकल। ये आप पे डिपेंड करता है कि जो 365 डेज आपको मिल रही है, जो 365 डेज आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है, जो 365 डेज आप युद्ध हो, ये 365 डेज ही तो है, तभी तो आप यूथ हो, तभी आपको टेक्नोलॉजी मिली है। तो अब आप उस 365 डेज को अपॉर्चुनिटीज लेते हो, या राइट पाथ लेते हो, या एक रॉन्ग पाथ चूज करके अपने 365 डेज छोड़ पूरी लाइफ बर्बाद करते हो। बोलते ना, एजुकेशन इज द ओनली बिजनेस still debating the usefulness of technology. I had learned somewhere we need technology in every classroom, as my teacher had said. मुझे अपने टीचर ने बताया था कि in every student and teachers had because have technology because it is the pen and paper of our time. टेक्नोलॉजी हमारे हाथ का पेन और पेपर है, और टाइम है हमारे हाथ में। तो अब हम उस पेन और पेपर का यूज करके कुछ लिखते हैं, या फिर उस पेन और पेपर का कुछ यूज ना करके छोड़ देते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन पेपर मिला, तो अगर हमें पेन और पेपर मिला है तो हमें कुछ लिखना है, तो हम कुछ लिखें। तो एज वैसे ही हमारे पास टेक्नोलॉजी और टाइम है, अब टेक्नोलॉजी का सही वे यूज करके उसके साथ कुछ करते हैं, या फिर एक रॉन्ग वेज में, जैसे हमारे पेपर में कम मार्क्स आते हैं, हम अपने लाइफ में फॉल कर जाते हैं, हमारे लिए कोई फ्यूचर नहीं बचता है। उसी तरह अगर हम टेक्नोलॉजी का भी राइट वे राइट पाथ पे यूज नहीं करेंगे तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, वो भी उस पेपर में आए हुए 0 मार्क्स की तरह हो जाएगा। तो वी डोंट हैव टू डू दैट। हम तभी यहाँ हैं जब हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हैं।
बिकॉज बोलते हैं ना, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्कूल कंस्ट्रक्शन गो टुगेदर। ये यूं ही नहीं मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, इसके लिए एक प्रॉपर फंक्शन, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है, तभी सभी आगे आए हैं। वी ऑल आर गोइंग here if we teach today's youth, अगर हम आज के यूथ को सिखाते हैं as we taught yesterday, जैसा हमें सिखाया गया था, जैसा मैंने अभी सीखा है। अगर मैं कुछ दिन पहले तक 16 ईयर ओल्ड की थी, मैंने बर्थडे ऑन पैसिव पे सेलिब्रेट किया, लेकिन इस 16 to 17 में आने के ड्यूरेशन में मैंने कितना ही कुछ ऑन पैसिव पे सीखा है। That's why I'm here and you are listening me, and that confidence built in my mind, in my language, in my gesture, we rope them for tomorrow। ये हमें उन्हें भी सिखाना है, ये उन्हें सीखना होगा हमसे, तभी तो आप यहाँ हो। We all are youth, we have to use that। I don't use technology in my classroom because it's a buzzword or trend. I use it because connecting my kids with the world will prepare them for the future। It's not just my use। ये word, sorry, बोलते हैं ना कि टेक्नोलॉजी मैंने इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ कि ये मेरे क्लासरूम में है और ये ट्रेंड के लिए है। उसी प्रकार हम टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये एक ट्रेंड है और हम सभी ऑन पैसिव पे इसका यूज कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, हम वर्ल्ड के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, एक फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं अपने अंदर। Technology integration is not an event, it should be an everyday part of our daily life, like crayons and breathing। कलर्स की तरह मैं इसको हिंदी में बोलना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी एक इवेंट नहीं है, ये हमारे लाइफ का, डेली लाइफ का पार्ट है। हमारे डेली लाइफ का पार्ट है ये, उसी की तरह है जैसे हमारे लाइफ में रंग और सांस लेना जरूरी है। आजकल के लिए जरूरी हो गया है, बिकॉज पहले होता था, लेकिन पहले आप कनेक्ट भी तो नहीं हो पाते थे, उसके लिए नए मीडियम्स बोलते थे। एक फोन, अगर फोन के अंदर हम देखें तो वी हैव मेनी थिंग्स इन इट, जस्ट लाइक दैट। टॉर्च हटा के फोन में डाला गया, रेडियो हटा के फोन में, ऐसी बहुत सारी चीजें। पहले टेलीफोन अलग आते थे, दैट 5 things in 1 thing and in many new features in it। So you have to think, youths, all youths, it's about you। 1 year, 365 possibilities। एक साल है आपके पास, उसमें 365 पॉसिबिलिटीज है। अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, आप इसका यूटिलाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। It's just a suggestion, you have to understand what you can do, because आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पाथ मिल गया है, आपको पॉसिबिलिटीज मिल रही है। You have to come and आपको बोलने का आगे आने का जरूरत है। शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है ना, जो बंद टारगेट, बंद भाग्य के दरवाजे बहुत बहुत इजीली खोल सकती है। सो वी हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। शिक्षा एक ऐसा स्टेशनरी चीज है जो ना तो किसी की जबरदस्ती दिया जा सकता है, ना किसी से जबरदस्ती जा सकता है। अगर आपके पास नॉलेज है किसी चीज से रिलेटेड, तो आप दूसरे को जबरदस्ती दे भी नहीं सकते हो और जबरदस्ती ले भी नहीं सकते हो। कोई आपसे छीन भी नहीं सकता, ये आपके हाथ में है कि आप इसको सीख रहे हो। बोलते हैं ना कि सनराइज अगर हो भी क्या है, अगर आप डार्क रूम में हो, एक डार्क रूम में खुद को बंद करके रखे तो क्या ही फायदा सनराइज का। आपको एक छोटा सा पोर, एक छोटा सा छेद का जरूर होगा उस लाइट तक पहुंचने का। तो हमें उस लाइट को फाइंड करने का जरूरत है। टेक्नोलॉजी का एक एप्रोप्रिएट वे में यूज करने का जरूरत है। जैसे बोलते हैं ना, शिक्षा हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है, उसी प्रकार उसी तरह आजकल टेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। सो वी हैव टू यूटिलाइज दैट। I think I am taking much of that time, but now we can continue that। and मैं इसी के साथ बस क्वाइट करना चाहूंगी अपने वर्ड्स, and ये जरूर बोलना चाहूंगी, प्लीज कम अप एंड अपने टाइम का यूज अप्रोप्रिएट कीजिए। एक बात मैंने पहले भी बोला है, वो बोलूंगी कि जिस तरह स्कूल हमारे लाइफ
स्कूल हमारे लाइफ का बोलते ना, सॉरी, छोटे में स्कूल एक पार्ट होता है हमारे लाइफ का। स्कूल हमारे लाइफ का पार्ट होता है, उसी प्रकार स्कूल हमारे लाइफ का फर्स्ट स्टेयर होता है आगे बढ़ने का, हमारे लर्निंग स्टेज का। उसी प्रकार और ऑन पैसिव, उसी तरह ऑन पैसिव हमारे लाइफ का सबसे बड़ा स्टेयर है सक्सेस की तरफ जाने का। सो बोलते हैं टीचर्स कैन ओनली ओपन द डोर, यू मस्ट एंटर योर सेल्फ। सो हमें मेरे को बस गाइड करना था और कुछ लर्न करना था, इसलिए मैं यहाँ थी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप डोर ओपन करके खुद, मैंने डोर ओपन कर दिया है, आपको एंटर खुद करना है। अब आप एंटर करते हो कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम सॉरी if I will mess it up, अगर मैंने कुछ mess करा हो, because I'm a little bit sick here. So thank you so much, ma'am, and thank you everybody. Thank you. Wow, Kashish, wow, that's amazing. And the words coming from a 17 years old child, it is out of the box and beyond. There are at times we wonder what my child, even me as a mother, I used to think what my child will become when he grows up or when she grows up, right? So this is the tomorrow which we see, the youth and technology. When we come to technology, the technology is on passive, right? So we have a very beautiful soul with us, Divina, and I would request her to speak about the topic and to let know how these two young souls spoke about the topic today. Over to you, Divina. Thank you, Rekha. Thank you for having me. I'm so happy to be here this morning. I love this topic, youth and technology. And I'm very familiar with the space because my son just started, he started about a year and a half ago, and he's started his own technology company, and it's in the Web3 space. So I've been helping him with that to get it going. But I'm very excited, and I'm so happy that a lot of youth today using technology for good. And that's what we want to encourage. We want to empower you to, use technology. It's a wonderful tool. It can help our lives to make our life, better, easier. But you have to have a balance, and you have to have the power to do good with it. And with ONPASSIVE, I think we can use that vehicle to help a lot of youth out there to help them to do good with technology, and we can change lives, and we can really help a lot of people to be very successful in this space, because that's where the future is. Technology, is where the future is, and AI is where we are right now. A lot of people might not like it, but you have to follow the change, and that's where we're at right now. And we need to use AI for to better human race. So thank you so much. Wow, Divina, you very well said that. Now most of our children as well, even my sister's daughter, she is in medical. She just cleared her medical and she's got the doctorate degree. But what she says is that everything is based on technology today. The science, yeah, the technology, it is going together. If you have to have the science in your life, you have to chase the technology of today, and you have to see only the positive points of the technology today. So here I would bring out few positive. First, I would go with the positive points. So we have a positive mind before we move on to few of the negative points, which I would be discussing a little later. So what I feel, the most positive points that we have for the youth with technology
Out of that, the first one is enhanced learning opportunity. Yes, it is providing a lot of opportunity to enhance our learning, because nowadays a child does not eat or drink. एक बच्चा जो आजकल का छोटा बच्चा होता है ना, वो म्यूजिक सुने बिना अपना Jack and Jill या whatever the songs are, until unless they are played on the mobile phone or any media, right? So it is enhancing the learning. They are learning a lot. जिगलिंग सीख रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं खाते खाते. दैट्स द चाइल्ड हु इज जस्ट वेरी यंग, जिसने चलना शुरू नहीं किया है, राइट? सो इट इज एनहांसिंग समहाउ और द अदर. Improved communication skills. Yes, no doubt. Earlier, we only had the school as a medium to go to the school, learn whatever the teacher taught. Apart from that, और कोई जरिया नहीं था. We could only read novels, या the books. लेकिन सब बच्चों को पढ़ना नहीं अच्छा लगता. Today, if you want to listen to the stories, today, if you want to listen to any novels, open the social media or any of the, the YouTube channels, or any good sense. I'm talking about the good, knowledge, where you can gain those knowledge. आप जो देखते हैं ना, वो जल्दी सीखते हैं. What you listen, you understand better, and you try to depict the same things. That is how you learn more with technology. Then coming to the next point, greatest creativity and self-expression. You can, if anybody leaves you alone for some time, agar akela chhod diya jaye na, bolna bhul jaoge wo language. If you are alone in a place, or maybe if I move on to any other place, I actually would not be able to communicate in the same language. काफी दिनों के बाद अगर मैं इंग्लिश ना बोलूं ना, तो मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगी. थोड़ा मुझे टाइम लगेगा फिर से उस लैंग्वेज को डिपिक्ट करने के लिए. सो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? इट इज बाइंडिंग एंड गिविंग अस मोर ऑफ द नॉलेज. सो यस, technology is indeed a boom to us, our lives. Then it enhances problem solving skills. Of course, there are many games. बहुत अच्छे games भी हैं. There are many games which we can play, and we can solve the riddles or solve the problems, which will help us to grow our mind, and it will help us to grow. मतलब as in हमें अपने आप को ग्रो करना है और अपने ही सॉल्व करने हैं अपने प्रॉब्लम्स को. We will not stick to only problem. We will start learning about the solutions. That is how the technology is helping us. It's not only about youth, it's about everyone. Hello, Yvonne. And Yvonne is a face जो youth को बहुत आगे लेके आ रहे हैं. And Yvonne, you are doing a tremendous work, and thank you so much for being with us tonight with these beautiful faces. It's tonight here, as in it's night time. It's morning for you, we know. But thank you for coming, and we will for sure have your feelings, and we would love to hear from you as well. So next, coming to the point, improve coordination and motor skills. Right? Now, there are so many activities which in earlier days, it was not possible to learn, right? You had to go to a specific college, or एक ऐसी जगह में जाना है, सिर्फ वहीं पर, you only would be educated there. But today, the technology has opened so many centers. Technology ने एक ऐसा जगह बना लिया है कि you just open it and you get to know. You get the knowledge at home, sitting at home. The power of technology. And moving on to the next, enhance memory and concentration. Indeed, yes. Memory, हम अगर कुछ भी करें नहीं ना थोड़े दिन, तो भूल जाएंगे कि हमने क्या किया है. बुक्स को देखना पड़ेगा, लेसन्स देखने पड़ेंगे. बट आज टेक्नोलॉजी ने हमें एक ऐसा स्तर दे दिया है कि we just need to go to the technology, ask them, and memorize it. It has given a lot of power to us to memorize things, right? बहुत सारी जगहों में अब आजकल हम फोन पे ना लगा देते हैं कि यस मुझे अब ये टाइम पे ये करना है, मुझे अब ये टाइम पे ये करना है. It is
helping us in every stage. So technology ka agar hum gungaan kare, it will be endless, right? Increase exposure to difficult cultures. वैसे मैंने ये बनाया था, मगर it would take a lot of time, so I'm just giving the points out here. Improved organization skills, right? And preparation for the future. How our future would be tomorrow. You can prepare it. बहुत अच्छे lessons और बहुत अच्छे pointers मिलते हैं आपको technology से. आपको सिर्फ और सिर्फ vigilant होना है. Be vigilant and you will get everything from the technology. I'm talking about the good sides of technology. Now I would really request Yvonne, who is with us from USA, because she is doing a tremendous work with the movement, one global movement for the youth, and she would have a lot for us as well today. So Yvonne, over to you. Okay, can you hear me? Thank you so much, Rekha. Thank you. And I apologize for just popping in, and I also apologize because when these kids are coming home for the long-term holiday, you have to get them settled in and get them going before you can get involved again, especially if you are staying with your mother, taking care of your mother. So I've been so busy, and just like I'm absent, but I'm not absent. You guys are always with me in prayers and everything. So, but from now henceforth, I am going to get fully involved, except otherwise, I'll get fully involved and get me involved in everything. So I just want to thank you guys so much. You are thanking me, but I am thanking you guys because Wow Women is the place to be. Wow Women is the foundation of all society. You guys, without you, there'll be no children. Without you nurturing the way, loving, caring, and teaching what you are doing, there'll be no children at all. I would not be there talking to the youths. So I cannot do without Wow Women. I cannot be teaching the children without you guys. So that is why my prayer is that two of these organizations come together, bond together to empower the world, because we are getting older, we're not getting any younger, and there has never been any future without youth, never in any history of mankind, the way we are created. And so it's our responsibility to be there and making sure that by the time we exit the stage of life, we must have done what we were supposed to do, and then we'll be smiling so that our descendants too and the whole world will be smiling. So I just want to thank you so much for this topic today, youth and technology. It is just such an important topic because, as we know, and in the present day and even in the past, but thank God that ONPASSIVE is going to change everything around for the better, for the youth and for all of us. Technology, it's very unclean in the world, very, very unclean. So our kids, they get bombarded from left and right with technology that it's ruining them, it's bringing them down. But with ONPASSIVE, the kind of technology, artificial intelligence that we are having, Mr. Ashmufara is bringing to us, is clean. It is created to serve the children and serve everybody with high ethical standards, high value, not just any kind. Even all the products, it is created to serve especially our children. And if our children are served, we all are being served. So, in the past, you see our kids, they stumble on things that they are not supposed to stumble upon because of technology, whether it is the phone, the TV, or the iPad, you name it. But today, we are so lucky to be some of those that are going to be using this clean technology provided by ONPASSIVE through our CEO, Mr. Ashmufara. I am so happy. Somebody like me, I am just being exposed to technology at my age, if you can imagine that, at my age. But it is due to the University of ONPASSIVE that I have been exposed, and now I can be able to click here, click there, and things become so easy for me, even helping me in school. So I am really so grateful. So you talked about concentration, because the kind of technology that
ONPASSIVE with Ash Mufari is building is the kind of technology that aligns with the natural ability to think for children. It's like nature. He aligns it with nature. How do human beings operate? He aligns that with the psychology of children from conception to birth and to growth and to death. That is the kind of technology that Mr. Ash Mufari is building. Very natural, that it doesn't look like you are taking something so strange and putting it into your system. It aligns with the way the human brain works, especially our children, so that they will still be using their own natural God-given skills, but that one will be there as an aid to help them to realize what they would have spent a lot of times being bombarded by unclean technology, to realize in such a short amount of time and still do well, so that they can utilize that excess time to even do more for themselves, their families, and other people. The same thing too with us. So technology concentration is natural. So that is so powerful for me, because I now know that children of the world, all the children are my children. They will now be working with something clean, something natural that aligns with their core values, align with their intuition, align with what they have been born to do, and the gift within them, without being so fake or without being unreal. So that is so important. And so organizational skills, you talk about that, and I'm just repeating what you just said, because it is true. It is so true. You know, the technology that we are fortunate to be a part of now, and our children, it's arranged in such a way that you have these organizational skills. And again, it is not just organization from somewhere that is not natural. It's organization that is supposed to be there. This thing is just there to remind you and to help you to know that this is the way things are supposed to be done. It's just like you're repeating an affirmation to yourself repeatedly. That is to make it to stick. So this kind of organization is to help all of us, our children. I talk about children a lot because those children depend on me and you. They depend on us. So they will help them to organize. Whereas my son is doing aerospace engineering, very disorganized, but he knows when he wants to organize, he will do it so well. But in the 1 or 2 days, the room is something else. But with this now, I now know that because he's busy studying and writing books and doing other things, he will be able to organize without so much stress, you know. And that is true for all the youth. I see my girls here, Vasvi, and what is my other girl, Vanshika? I don't see Vanshika here today, but I'm talking to all my kids out there. So improve that organization. It enhances cultural and language improvement. This is so important. Why? We have billions of languages across the globe. And for me, I will want my mom to understand, who doesn't know how to read and write. I want my grandmother to understand. I will want my aunties, I want my uncle, I want everybody to understand. My village, they speak Meta, and they will not be able to understand the English that you and I are understanding and speaking. So ONPASSIVE is there. In India, they will be able to translate into the Hindu or all the languages. They will be able to translate into Meta and all the languages across the globe. Why? Because even if it doesn't get there in time, we are here to keep reminding Mr. Mufari, hey, we need this. We need this for our people, because we need those tools to serve our people and serve them well. And we have interpreters. It's even going to make it so easy. And so we already have a lot of languages in ONPASSIVE now that you can choose from, and the list is going to continue. And eventually, like the CEO says, we are going to take over the world in a positive light, not just taking over the world because of anything, to help people to realize that there is something better. So thank you so much. You have touched on a lot of points, and I think I will use this topic that you brought up today to also teach in One Global Movement. So we move hand in hand, and please, let's move hand in hand together. What can we do? Because if you don't rise, we don't rise as women,
we will not be able to make our children right. So youth and technology is such an important thing. Technology is here to stay. It was created by God. You cannot talk about God without technology. You cannot talk about technology without talking about God. It was created, but we need to do it the right way that honors that creation and conception within all our societies and villages. Thank you so much. This is wow, wow, and wow. Yvonne, to be very honest, you are right. A mother and a youth and technology of today. We all have to understand each other. The reason is that there might be a generation gap, but to bring it closer, the one movement for the youth and the wow women, for all the mothers to understand their children with technology is a must and mandatory today. बहुत ज़रूरत है कि हम महिलाएं as in mothers और बच्चों के साथ हम youth के साथ हम टेक्नोलॉजी को समझें. एक जनरेशन गैप को थोड़ा सा कम करने के लिए हमें साथ होना बहुत जरूरी है. Well said, Yvonne, and I love the way you raise this point, and it's very important as well. We also just stay with us and stay connected because we have few more. These are the youth. I would like to introduce one incredible youth today. Her name is Ria Vyas, and to your surprise, to our surprise, during this the 14 days free trial, she has already subscribed approximately 900 students to OConnect ONPASSIVE as a user and the customers. Can you believe that? And she is teaching them the OConnect, the features, and every day she is taking time to help those customers. They are just the customers, the early bird customers. I mean, whatever you can call them, because they are very, we could not think about it, right? I will just go ahead and sign up so many, but 800 or 900 students, that means a lot. The entire half of the college or the school. So Ria, we would love to hear from you. Ria, over to you. We are so proud of you. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. First of all, thanking you, ma'am, for giving me the opportunity and encouraging me. Myself, Ria, I would like to interrupt. This is the first time she is on camera as well with ONPASSIVE. So we can clap for her. Yes. Yes. Go ahead. Yeah. Thank you, ma'am. My name is Ria Vyas, daughter of Yashoda Vyas from Rishikesh. I am second year student at Graphic Era University, Dehradun. I am very glad and blessed to be a proud member of ONPASSIVE. I feel very pity for those who are still negative towards ONPASSIVE. No matter our success will answer them. Over to you, ma'am. I really would love to know one question, Ria. Yes, ma'am. You're working so hard for ONPASSIVE. You already have been working, to solve and to let the customers that you have just signed in the school, giving them time with OConnect. How do you manage that? It's just a curiosity so that I can also learn this technique. मैम एक्चुअली मेरा कॉलेज होता है फ्रॉम 12 to 6, तो मतलब मैं सुबह उठ जाती हूँ 8 o'clock को, तो फिर जितना टाइम रहता है ना 12 to 8 के बीच में, तो उस टाइम मैं कॉल करती हूँ सबको मीटिंग्स के बारे में बताती हूँ, सबको फिर इसके बारे में बताती हूँ कि ऐसा होता है, तो उस हिसाब से. Amazing. Thank you so much, Ria. And we would move on to another beautiful soul who is with us, Komal Kumari, and she is from, I can call it, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर हम उसे as a गाँव, as a rural area कह सकते हैं, but she is very confident and she's going to change the world as well. अपने area को तो जरूर. Komal, over to you. Hello, ma'am. Thank you for giving me this opportunity.
to talk about youth and technology. My name is Komal. I am basically from Bihar, Patna. Uh, I'm also a proud brand ambassador of my area. Basically, in this my area, no other people is the I know who is the brand ambassador or of ONPASSIVE. Before starting with the topic, मैं quick बोलना चाहूँगी. We have nothing to fear. We can learn from each other. जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी हम लोग के लिए एक मतलब इंसाइक्लोपीडिया एंड डिक्शनरी लाकर दिया करती थी और एटलिस दिया करती थी लाकर. और जब हमारा समर वेकेशन होता था तो हम लोग अपना हॉलीडेज होमवर्क स्टार्ट करते थे उस एनसाइक्लोपीडिया एंड मतलब उस टाइम टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था तो हम लोग अपना हॉलीडेज का होमवर्क उसी से किया करते थे. पर जैसे जैसे हमारे एरिया में टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ फिर हमारे एरिया में एक मतलब छोटा सा कैफे ओपन हुआ तो हम लोग अपना हॉलीडेज होमवर्क जाके टेक्नोलॉजी की मदद से किया करते थे. पर उससे पहले हम अपना हॉलीडेज होमवर्क या कुछ भी करना होता था मतलब कुछ भी मतलब करना होता था हमारे लाइफ से रिलेटेड तो हम लोग को मतलब एक्चुअली मूव करके कहीं पे जाना पड़ता था. और पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है. आजकल आज के टाइम पे हम लोग अपना मतलब एक सिंगल टच से अपना मतलब कुछ भी करना हो आप अपने घर से बैठे बैठे हर एक चीज आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं. पर थोड़ा टाइम और एनहेंस हुआ थोड़ा और टेक्नोलॉजी मूव किया तो हम फर्स्ट टाइम मैंने फेसबुक के बारे में सुना था तो मुझे मतलब उस पर आईडी वाईडी क्रिएट करना नहीं आता था तो मेरे भाई ने मुझे मतलब आईडी उस पर चलाना सिखाया. पर वो जो मेरा भाई था वो मेरे से 2 से 3 साल छोटा था और वो मुझे मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी को लेके मुझे ऐसा फील होता है ना कि अगर आप उसका यूज करते हैं उसे एब्जॉर्ब करते हैं तो आप मतलब जितने यंग होते हैं उसको आप अपनी लाइफ में उतनी जल्दी जल्दी आप एसिमुलेट कर लेते हैं अपने लाइफ में. और मतलब एक मुझे और एक चीज याद है ना कि मैं जब छोटी थी तो मम्मी मुझे बताया करती थी कि जब वो मतलब गांव में रहती थी तो उन्हें 30 किलोमीटर ट्रैवल करके उन्हें मतलब एक कॉल पिक करने के लिए जाना होता था. तो मतलब उस टाइम पे ऐसा टेक्नोलॉजी था कि मतलब काफी दूर हम लोग को ट्रैवल करना होता था या कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें काफी दूर तक ये करना पड़ता था. पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है. टेक्नोलॉजी मतलब हमें टेक्नोलॉजी ने अडॉप्ट किया है या हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है. मतलब आप ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज इन सिंगल हैंड as like we invest in on passive and what we get it from now. That's all about, ma'am. Over to you. बहुत सही बात करी आपने. इट्स अमेजिंग. मतलब हमने सच में टेक्नोलॉजी को ना धीरे 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 ही सीखा है. एक एक स्टेप से सीखा है. इनफैक्ट हम सीख रहे हैं क्योंकि हमारी भी एज में कुछ भी नहीं था जब हमने स्टार्ट किया था. हेलो डॉक्टर बेनी. और आज हम देखते ही देखते यहाँ तक पहुंच गए हैं कि टेक्नोलॉजी इज एट आवर डोर स्टेप. Everything starts with the technology, and from the time we wake up, okay, everything starts from the technology until the time we sleep at night or in the day or whatever time we sleep. We are still associated and attached with the technology. किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से. Starting from taking the breakfast to take the last nap of the day or whatever it is, we are just reliable or just पूरी तरह से हमने अपने आप को झोंक दिया है टेक्नोलॉजी में कि टेक्नोलॉजी मेरे लिए सब कुछ कर देगी. एंड नो डाउट द मदर्स ऑफ टुडे शुड फील प्राउड क्योंकि हमारा पूरा किचन जो है ना इट इज विद टेक्नोलॉजी. वी जस्ट से इट एंड थिंग्स आर डन. आई रिमेम्बर माई मदर यूज्ड टू डू एवरीथिंग विद हैंड और आज भी वो कहती हैं कि हाथ से करना है. Even today she says that I don't want any technology to be used in my kitchen. I only rely on my hands. But we as today with technology, we rely on technology. और हमारे kitchen में everything is based on the technology. खाना बनाना है, it is there. कुछ भी करना है, it is there. So that is how the technology has changed. Moving on, we have Dr. Benny, and if Dr. Benny, if you can, I think she is, can you hear us?
Okay. Yes, please. I want to put my background, please. Okay, sure. In the One second. meantime, I would like to call महिमा चौहान जो हमारे साथ हैं. इनकी आवाज को हमने जगह जगह सुना है और बहुत मोटिवेशन है, भर भर की मोटिवेशन है. सो उन्हें सुनेंगे. उसके बाद हमारे साथ एक नन्ही सी परी है, उसको हम जरूर सुनेंगे. महिमा जी, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और सभी पार्टिसिपेट का मैं थैंक यू करती हूँ और सभी का वेलकम करती हूँ. मैं सबको सुन रही थी बड़े ध्यान से. ये हमारा आने वाला फ्यूचर है और इनको इतना मोटिवेट देख के, जागरूक देख के, आई एम सो हैप्पी, प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा लगा आप सबको सुन के. और कशिश को तो मैं काफी बार सुन चुकी हूँ, कोमल को मैंने आज सुना और रिया व्यास को मैंने आज सुना. तो वाओ, देख के अच्छा लगा. और देखा मैम, इसका सारा श्रेय आपको जाता है. और इस प्लेटफॉर्म को देख के तो मुझे लग रहा है वाकई में बच्चों को आगे आना चाहिए. और मैं अपने बेटे को भी तैयार करूंगी कि वो भी आए और आगे बढ़ के अपनी बहनों का साथ दे, बहनों से सीखे, बहनों को सिखाए जो भी उसके पास नॉलेज है. उसके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज बहुत है और बहुत छोटा था तब से उसको टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट है कि उसको पढ़ के नौकरी करने का कोई उसका ख्वाब ही नहीं है. उसको टेक्नोलॉजी में उसे कोडिंग करनी है, उसे वेबसाइट बनानी है, उसे ऐप बनाने हैं. और वो बस दिन रात मुझे यही सिखाता है, मम्मा एक ऐप बना के मैं अपना सेल कर दूंगा ना तो करोड़ों रुपए आएंगे. ऐप की ताकत वो मुझे ऑन पैसिव जब मेरी लाइफ में नहीं था तब से बताता आ रहा है. आई थिंक वो बहुत 9th 10th में था तब से मुझे परेशान कर रहा है, ऐसे ऐप बनाऊंगा, वैसे ऐप बनाऊंगा. और आज के मैं अपने सभी बच्चों को ग्रांड सल्यूट करती हूँ. इस प्लेटफॉर्म पे देख के मैं बहुत खुश हूँ आप सबको. तो वी आर सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच. एक बात और बताना चाहूंगी महिमा जी, आपने बोला ना आपके बेटे को आप तैयार करेंगी, ही इज ऑल्सो यूथ. तो यू वांट एक वन मूवमेंट जो इनका बहुत बड़ा मूवमेंट है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए ये डेडिकेटेड किया है इन्होंने. वहां पर वी हैव प्लान्ड, यू वांट दैट वी वुड बी गेटिंग ऑल द यूथ to your platform wherein they would be managing the entire session, the girls and the boys, doesn't matter, only the girls. And the day is very soon coming. I would इस मंच के माध्यम से मैं जरूर चाहूंगी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को ना सीखना और सिखाना है एज ONPASSIVians. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यूथ टू कम अप एंड लेट्स बी द पार्ट ऑफ द मूवमेंट. All the youth, that is the boys as well, whosoever would like to be the part of the webinar, wherein you would be, not the webinar, but the session, wherein you would be leading the entire session as the youth, as the host and the co-host, and representing the entire slot, I mean, entire stage of for that day. So we really would love to invite you. You can just go ahead and let them know. I am just so excited. I am just so happy. Thank you so much. This is so important. This is what I'm talking about, that coming together, things begin to spring out of our hearts, and we inviting all the youths. I welcome you all. We want to empower you. We want to help you build the kind of future that you want for yourself and others. It is my responsibility and my passion that I empower you to take the stage. Speak to empower, speak to impact, speak to teach, speak to bless other people. I want you guys to be confident. Know that you can speak. And mistakes are a part of it. I still make mistakes, even though that is what I'm doing, but I still make mistakes because those mistakes is part of growth.
It tells you that, you know what? The fact that you made a mistake doesn't mean that you have failed. Failure only comes when you give up. But those mistakes is a necessary part to keep building you up, nurturing you to grow. I make them. I still go back and correct them. I will want you to take over the stage like a storm so that we can sit there and just listen. I want you guys to go wild in the world. Take the ethical principles of Wow Women, One Global Movement, ONPASSIVE, and everything that surrounds ONPASSIVE, the greatness that we have been ushered into to the world. I leave it into your hands. We will be following. I have my son is 22. He teaches me, but I'm the mother, right? Because I don't know what he knows. You guys, the Vashika presented last time. I'm like, whoa, I learned a lot from her. And, you know, she is just a child. You guys come on there because I am behind all the youths in the world. When the apples start falling, you will hear me all around the world because I will follow you guys because you're going to be the yardstick, the foundation where other people will look up to so that they can begin to also build their life. I will follow you not just by talking. I know what God has put in my heart and it's going to follow you all over the world to make sure that you're successful, you're happy, your family is happy, the children are happy so that this legacy will continue. So I will welcome you guys with all my heart. All of us will be glad to have you. We love you all. Thank you so much, Yvonne. Thank you so much. That means a lot. And yes, we will be planning that very soon. हमारे साथ एक नन्ही परी है. I don't know. I have gone. I mean, there is an affection with her today. She's very sweet and she looks very confident. And that's what we need today, Mannat Thakur. And though she's sitting with her sister-in-law, but then again, the relationship means a lot. So yes, Mannat, over to you. Firstly, thank you to Rekha ma'am for giving me this beautiful opportunity. And myself, Mannat Thakur. I am in class 9. I am 14 years old. Today we talk about youth and technology. So today I want to tell to youth, you will shine and you will achieve whatever you want if you are working hard and dream more. Thank you. Over to you, Rekha. Wow. Mannat, being in 9th and you are confident to face the camera today, I'm sure just in couple of months, you would stand on a big stage and you will guide the people or the children who are at your age. We are so proud of you. Thank you for showing up and thank you for coming. That means a lot. Divina, I really would like to hear 2 words from you for this beautiful soul before we move on to Dr. Benny. Well, I just want to congrats all the youth here on the platform today. Thank you for your courage and thank you for, be brave enough to speak up. And that's how you can grow and that's how you can learn and that's how you can teach other people, other young kids to follow your footsteps and be brave enough to speak about your passion and what you want to do in life and use technology for good. And I applaud all the youth and thank you so much for being the light out there for all the youth. Thank you so much, Devina. Now we have a beautiful soul who speaks out her voice, always excited. And I have seen her with a smiling face, spreading the smile and the love to the world. Dr. Benny, over to you. Oh my gosh. Wow. Thank you so much for giving me this opportunity, Sister Rika. I call the ladies my queen. I do. When I saw this, the background, at first I saw Sister Queen Verona, and I saw you. I said, wow, you guys are discriminating. So how come I'm not there? But when I saw my young girls
I said, oh God. I said, I have to be here. Vashi, right? I'm trying to pronounce your name. Vasvi. Vasvi, right? You're my girl. By the way, Manat, you're only 14? Hey, God. I am proud of you, right? I am. Actually, I'm proud of your mom. That's your mother there? Is that your mom? She's a sister-in-law. Oh, sister-in-law. I want to congratulate all our youth, our girls, our daughters. You know why? You guys are the future. You are our future. Because at any time I might leave the world and you will be the one to continue. Look at you guys. Hey, first I'm proud of your parents. No, let me first of all start. Please give me time. All right. I want to take this special moment to thank our Father in heaven, right? He created all of us in his image. I know that a lot of people don't believe that there is somebody. We don't see him, but he wakes up all of us in the morning. The air that we're breathing, it's because of him. He wants you to be alive. You don't see him, but he's our maker. So this man, our Father in heaven, brought somebody to all of us. Who? Our visionary. And who is that visionary? The one and only Mr. Ash Mufareh. If it wasn't for him, we will not be here today. If he was selfish, we will not be here today. All of us here. Actually, we have 1.4 million plus, right? Affiliates or brand ambassadors. We have 8 billion humans on earth. But only 1.4 decided to join. And now look at our youths. I am so proud. Let me tell you, most of the time, my girls, I call you guys my girls, right? I love my girls. Even though I still love boys also. But you guys are our future. Now you pushing yourself, it is the determination. When you are determined to do something, you push yourself. Then when you pray to God, he will be there for you. So you can't just sit and just pray, and you don't do it. You're determined. Oh, I'm determined to understand what is IT, what is artificial intelligence machine learning, right? Our company, it is a software company, software development company. A lot of people don't know about ONPASSIVE. ONPASSIVE, oh, I should stop, right? Now I'm talking too much. I'm just excited of our younger girls. Keep up the good work. I want you guys to bring more of our girls, our younger youth. Let them come here. Let them learn more before I leave, before I die, right? I want the best for you guys. Look, I always advise my girls. I said, there are a lot of boys out there. They will say, oh, you're beautiful, right? Tell them that I know God created me, right? Because sometimes they want something, but just tell them that, look, I know I am beautiful. Thank you for that. Then concentrate, go to school, concentrate with your education, and try to have friends. You know, there are certain subject matters that a lot of people don't understand. Okay, let's say if I know math, Dr. Mundi here, maybe she knows psychology. Sister Reka knows math, let me say history. And then, let me say, Mahima, you know chemistry. So if you don't really understand, let me say, if I don't know chemistry, I will push myself to be friends with Mahima, right? That's what you have to do. Sometimes you will, well, I'm not saying that we should pretend, but try to go closer to somebody that knows the subject matter more than you.
Be friends with that person, because I want you to have 100% in class, right? You do your homework. Well, I know I'm not here to be preaching, but I'm just excited seeing my younger girls here, that you guys are youth in technology. Technology is where to go. People don't understand. So make sure you study more about the artificial intelligence and machine learning. I love you all, because if I sit here, start talking, maybe it will be till tomorrow. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Benny. And, you know, you have touched a very important point and important topic as well, wherein the youth have to understand what is and where, what is important to them, and where they can find the place to fulfill that important point for their life, right? Like, if I'm not good in one thing, I would reach out to somebody who is good in that thing. So that is how we will be improving ourselves, and with the technology as well. तो एक कदम हम बढ़ाएंगे, एक कदम टेक्नोलॉजी बढ़ा चुकी है, मिलके हम एक नया संसार जरूर बनाएंगे. That is a promise to ourselves. हमारे साथ एक और मदर है जो बहुत प्यारी हैं और जिन्होंने बहुत काम किया है बहुत सारी महिलाओं को आगे लाने के लिए. उनकी मीठी आवाज सब जानते हैं, कांतामणि. कांतामणि जी, आज अपने बच्चों की तरफ से आप अगर कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हैं तो. यस, थैंक यू अगेन रेखा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल. और यहाँ पे हमारी स्पेशल, हमारे फॉरेनर बोल सकती हूँ मैं, ब्रांड एम्बेसडर, उनको भी ग्रेट वेलकम है इस मंच के माध्यम से. और सबसे पहले तो मैं मैम, जितनी भी शेयरिंग थी आज हमारे वास्पी से लेकर कशिश से लेकर हमारी जितनी भी बेटियां बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे यंगर समथिंग मेरे ख्याल से 14 ईयर राइट, लास्ट जो हमारी यूथ आइकन थी, उसको मेरे मिस्टर बिल्कुल बच्चों को वॉइस सुना रहे थे और पिक्चर भी दिखा रहे थे कि देखो आपके एज के हैं, क्योंकि मेरी बेटी भी समथिंग 9th क्लास अभी पास आउट हुई है और करंट में 10th गई है. तो मतलब प्राउड होता है देख के कि हमारे ऑन पैसिव में इतने यंगर यूथ आ रहे हैं जिनको फॉलो करेंगे आने वाले दिनों में. और मुझे भी प्राउड होगा कि मैं भी अपने बच्चों को इस मुकाम पे, इस प्लेटफॉर्म पे ला पाऊं और जो ऑन पैसिव की रियलिटी है कि विजन वो लोग समझ पाए. आजकल हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल तो हम लोग यूज करते हैं, टेक्निकल फील्ड कई लोग का है बेसिकली, लेकिन जो करंट में जो टेक्निकल का जो रियलिटी है ना कि वहां पे ना मतलब कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. पॉजिटिव में मैं मानती हूँ कि अपने कैरियर को फोकस कर सकते हैं कि सोशल मीडिया राइट, जैसे फेसबुक, ट्विटर, कई लोगों ने एग्जांपल दिया, उसका हम सही अगर सदुपयोग कर पाए तो फ्यूचर हमारा ब्राइट है. लेकिन अगर गलत वे में गए, वहां पे अगर हम ज्यादा सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करेंगे, फेसबुक या XYZ अदर प्लेटफॉर्म, तो हम लोग बस टाइम पास करेंगे, वहां कुछ सीख नहीं पाएंगे, तो समय लॉस है. क्योंकि लाइफ में मनी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक बच्चे को हमारी परवरिश जो पास्ट में हुई है ना, हम लोग बिजनेसमैन के रूप में नहीं सिखाया है हमारे माँ बाप ने. उन्होंने बोला बेटा पढ़ो लिखो, आपका एजुकेशन आगे बढ़ेगा. लेकिन आज के यूथ है ना, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें ये टेक्निकल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और सही समय में सही टाइम को विजुलाइज करना मैं मानती हूँ कि राइट है. और अगर हम लोग अच्छे गाइड कर पाए हमारे बच्चों को तो उनका फ्यूचर तो ब्राइट होना ही है, क्योंकि हमने हमारे बच्चों को भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है. तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे एक ऑन पैसिव में अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप कर पाए ताकि आने वाले यूथ उनको फॉलो करें. तो यही मैसेज देना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच. कांतामणि जी, ये कितनी खूबसूरत आपने मैसेज आगे दिया है कि पहले मैं अपने बच्चों को भी ये दिखाऊंगी और उन्हें भी आगे लेके आऊंगी. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव के साथ क्या करने वाली है. थैंक यू सो मच. अगर कांतामणि जी आपके और हमारे सबके बच्चे आगे आ गए ना, द यूथ, it should start from our home. So if we encourage our own children, even my children, to come up and speak for the youth, because this is the best platform where they can actually change the thought process of every youth.
in the coming generation, right? So it has to start from my home, from your home, and from everyone's home. Thank you so much. मीनाक्षी जी, आप जब तक ना बोलोगी तब तक कैसे सेशन एंड हो सकता है? तो हम आपकी स्वीट स्वीट आवाज से जरूर सुनेंगे. आपने भी अपने, देयर आर वेरी फ्यू सिस्टर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, या फिर हम बोलेंगे कि जो अपने फैमिली में इन लॉ के साथ होते हैं ना, देयर आर वेरी फ्यू हु ब्रिंग एंड एनकरेज, स्पेशली द सिस्टर इन लॉज, टू दिस स्टेज wherein you grow and I'm with you. There are very few women. There are very few women who does that. And आज आपको देख के ना बहुत सारी मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ और उन सबको एक चीज तो सीख तो मिल गई होगी कि ग्रो. आई एम विद यू. ओवर टू यू. थैंक यू सो मच रेखा मैम. सच में वाकई वाह, वंडरफुल सेशन रहा आपका. जो आज का यूथ का सेशन था, वंडरफुल ऑसम सेशन था. यूथ एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो मैं अगर खुद से बात करूं तो जब मैं 10th क्लियर किया था तो मेरे को फर्स्ट पापा ने कहा था कि 11th में बेटा आपने एक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है उसे जरूर लेना है. तब हमारे टाइम पे मैं भी कोई ज्यादा मैंने तब मैंने 11th से ही टेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी, तो आज ज्यादा नहीं तो 50-50 जानती ही हूँ. और शादी के बाद आपको पता ही है सबको कि बिजी लाइफ हो जाती है, तो सब कुछ छूट जाता है. देन बच्चों में तो आज मैं कहूंगी कि जैसे वासवी को मैं अगर मुझे भी 1-1.5-2 साल से मैं टच में हूँ, तो वासवी की एग्जांपल दे दे कि इन सब बच्चों को मैंने इनकरेज किया. मैंने कहा देखो वासवी अगर आगे आ सकती है तो आप लोग क्यों नहीं, है ना. मेरी गुड़िया है 5th स्टैंडर्ड में, अभी उसको मैं कह रही हूँ कि तुम्हें भी यूथ में आना है, बस अभी तुम्हारा नंबर लगने वाला है. और भी जितनी भी मेरे साथ रिलेशन में मेरे साथ इन लॉज में बेटे हैं या बेटियां हैं, कुछ भी हैं, जो भी है, तो अगर हमारा फैमिली रिलेशन अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छी है, तो क्यों नहीं हम उनको बिजनेस के बारे में आगे ला सकते. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी फैमिली के जितने भी यूथ हैं उनको हमने इन फ्रंट लाना है, ताकि जिस तरह से आज मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जरूर 40-50% लोग जानते होंगे. तो उसी हिसाब से मैं उनको भी कहती हूँ कि हाँ, आपका चेहरा भी सबके सामने आए, आपके अंदर जो है उसे बाहर लाना है. तो यही मेरी कोशिश है कि मैं सबको इन फ्रंट लेके आऊं और सबको उनकी पहचान करवाऊं. और यूथ के अंदर मैं कहूँ टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, क्योंकि आज जितना भी यूथ है वो हमारे लेवल से ज्यादा एडवांस वो फीचर्स के बारे में जानता है. ओ कनेक्ट को जब हम अभी स्टार्ट करना शुरू किया है, तो मैं अगर उसे यूज कर रही हूँ तो बच्चे देखते हैं, तो हाँ वहां पे मेरा बेटा अभी 3 इयर्स का है, वो कहता है मम्मा वो वाली क्लैपिंग्स वाली लगाना, म्यूजिक, उसको याद हो गया कि वहां म्यूजिक आता है, क्लैप्स वाला, है ना. वो सारे के सारे फीचर्स उसको लर्न हो गए, अभी 3 इयर्स का हुआ है. मम्मा वो वाले फीचर्स, वो क्लैपिंग लगाओ, वो जो बोलते हैं अंकल, है ना, वो मैंने कहा बेटा वो अंकल नहीं बोलते वो फीचर्स हैं हमारे ओ कनेक्ट के. तो मैं सच में बहुत प्राउड फील होता है, बहुत लकीली हम लोग ऑन पैसिव में आए, हम लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने एनडीए साइन किया था वो दिन हमारे लिए बहुत लकी दिन था. थैंक गॉड करते हैं कि हमारा माइंड सेटअप अच्छा था, हमारी सोच एक मेंटालिटी हाई लेवल की थी, तो हम लोग इस बिजनेस में आए. अदरवाइज बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे थे जिन्होंने एट लास्ट ना कर दिया कि हम नहीं आ रहे, लेकिन अभी उनको ऐसा नो क्यों. मैं अपने सीईओ को, एस सर को, जिनकी वजह से, या उनकी मदर को सबसे पहले, जिन्होंने ऐसे बेटे को हमारे लिए, हमारी लाइफ चेंज करने के लिए भेजा है ना. एस सर का एक ही स्लोगन है, माय नेम इज ऐश एंड आई एम योर फ्रेंड. देन at last I am Meenakshi Mangral and I am your friend from JNK India. Okay, over to you Rekha ma'am. Goodbye. वाव वाव वाव. ये वाव जो एक शब्द है ना हमारे उसमें साउंड में, रीसाउंड में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई रियली विश कि वाव 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 होता फॉर वाव वी वाव वुमेन के लिए, तो मजा आ जाता. I would really love to, if I get a chance, I would place my voice there as wow, wow, and wow. I would love all the women to do that in their own, resound in their own voice,
ताकि हम जब भी सुने तो हमें महसूस हो कि हम wow women हैं. We are all wow women, and that's the difference when we come to ONPASSIVE wow women, because we are here to change the world. सच में आज का सेशन बहुत अच्छा था. हैंड रेज मैं जरूर लेके सुनना चाहूंगी वासवी से एंड रिया से. फर्स्ट वी विल गो ऑन टू वासवी. वासवी, ओवर टू यू. Thank you so much, Rekha ma'am, and I know time भी बहुत हो चला है, and I will keep it short. And of course, firstly, I would really thank to you, Rekha ma'am, for giving me this opportunity. And I would like to thank Yvonne ma'am, Dr. Benny, and Devina ma'am and Mahima ma'am. Exactly. You all are, those smiling faces and those encouraging words. This really means a lot. And Meenakshi ma'am, how can I forget you? And Kantamani ma'am, to everyone out there, and to all the youth. Really, thank you so much. And I just want to say, actually, I was watching the live simultaneously. So someone commented, it was technology has enabled our young generation to pursue their goals and opened by the path of success for them. And exactly, earlier, earlier people were like that, where is the opportunity? Where is the opportunity? And now world has changed because of, with the help of technology and everything. Today, there are a lot of opportunities. And to all the youth out there, come forward, because, today's youth is, growing with technology. So to all the youth out there, come forward, and we have to, do things in a way that it will lead others to join us in a very positive way. So thank you so much, everyone, and to all the youth, come forward. Over to you, Rekha ma'am. Thank you so much. This is wow. And Vasi, we really need you to be the face of a coming generation for all the youth, especially the girls. I really would. I'm seeing you leading a lot, many the girls, and with you I see Kashish as well. That you are leading. Actually, you are leading the best part, the best side of technology, and growing with it. And you are, you will be duplicating yourself. Many more Vasi and many more Kashish and many more youth. Mannat, you also are on the way. They will be joining you very soon. Ria, we would love to hear from you as well. Over to you. Thank you, ma'am. Ma'am, I will take only 2 minutes to speak. Actually, ma'am, I was very much nervous in the starting. So, ma'am, आपने मुझसे पूछा था ना कि you were very much curious about how I manage my time and things. So, ma'am, my mom since 2020, how serious she is about ONPASSIVE. So, looking at the seriousness, I decided to bring all my college students in this ecosystem so that they would also be successful in their life. And ma'am, AI is a future, and with ONPASSIVE, we will really achieve our goal. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you once again. Thank you so much, Ria. Today you have overcome this fear, and you have to do that. Once you overcome your fear, this is for all the youth. ये हर बच्चे के लिए है. पहली बार धक 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 होता है, और ये धक धक ना बहुत मीठी, बहुत मिठास और बहुत खूबसूरत होती है. अगर इसका एहसास नहीं किया ना, तो हमेशा उस डर से अंदर ही अंदर काश मैं कर लेती, काश मैं कर लेती. अब काश को आकाश मिल गया है, तो डर को एक साइड में रखते हैं. एंड जस्ट कम अप, फेस द कैमरा, face the world, face yourself, and face your dhak dhak moment. You will achieve everything in life. It's you who would achieve everything in life. So it's your first step with that dhak dhak moment. So thank you so much. Yes, जाने से पहले मैं जरूर थोड़े से negative points, just bit of a few negative points, since we had discussed on the positive points. I would just take 2 or 3 more minutes, and then we will end up the session for today. Thank you so much for being so patient with us today. So yes, there are only few which is very harmful for technology when it comes to the youth, which we have to avoid. हमें avoid करना जरूरी है. The first is
अगर बहुत ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं ना, तो डिप्रेशन comes and takes the place. Why? Because you get so much you get so much addicted with the technology that you think that technology is your life. You avoid everything else in life. Your parents, your teachers, your schools, your studies, everything. And it takes you to the wrong direction. Avoid it. Avoid only the negative part of technology and avoid depression for yourself. क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी the youth especially get attached to this depression very soon, क्योंकि वो सोचते हैं कि सारी जिंदगी सारी दुनिया उनकी समेट के रह गई है टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया में. So just try looking into the good and positive things of technology. दूसरा है lack of sleep, and this is one reason for depression as well. क्यों? क्योंकि हमारे को क्या होता है कि सिर्फ 2 मिनट we are scrolling the short videos. I also do. I enjoy them as well. So I think only 5 minutes and 30 minutes are gone. It's since I am doing it, I know I am avoiding my sleep. और ये बहुत गलत है. Please अपनी sleep, अपना जो नींद है ना पूरा करिए. Otherwise you are distracting your own body and yourself. बहुत जरूरी है. Then is obesity. बैठे रहना, कुछ नहीं करना, सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग खेलना कूदना भूल गए हैं. We have stopped playing games, right? We have stopped going to the park with our parents, or in fact we have stopped going on a morning or an evening walk. बहुत जरूरी है morning evening walk करना. Don't waste time. Don't waste time only and only in and on YouTubes or any kind of those social media. अपने लिए time देना जरूरी है. Do it. बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो है ना 80% जो बॉडी जो काम करती है वो एक्सरसाइज, स्लीप और खाने पीने सब में ध्यान रखने में. 80% से आप सिर्फ 20% के लिए आए हो, 80% आपने टेक्नोलॉजी को दे दिया है. So 20% is not going to help you. Then is learning barriers. क्योंकि आप एक उसी में स्टिक हो गए हो कि मुझे अब जो भी सिखाएगा यही सिखाएगा. You do not have faith on your parents. You do not have faith on anybody else. कि जो भी है, चाहे wrong information है चाहे सही information है, it is coming only from the technology. No, at times you have to listen to your family. At times you have to listen to everyone. Take knowledge from everywhere where you get it, where you get the correct information. Do not only rely on technology for that. And the next is, as you said, loss of privacy as well. हम लोग ना फेसबुक में जाके कुछ भी चढ़ा देते हैं, मतलब अपने पूरा दिन रात का स्टेटस कि आज अभी मैंने ये किया, अभी मैंने वो किया. People might follow you. Now becoming, as in ONPASSIVE, privacy would be one of the major things that we should be worried about, and our children as well. Right? We are being followed because we are ONPASSIVians. People would be following us. They would mislead us. हमें mislead किया जाएगा, हमारा फायदा उठाया जाएगा, बहुत सारी wrong information देके हम लोगों को गलत बोला जाएगा. So privacy, security, be secure. Don't share any private, most of your private things on social media platform. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So yes, these are few points. And cyberbullying, as Vasi you said. So these are few points which we have to remember when it comes to the negative points. Rest, enjoy technology with ONPASSIVE. ONPASSIVE is the best. So yes, I hope हम सब ने बोल लिया है, हम में से कोई रह नहीं गया है. So we will end the session here for today. We wow women, and we will be back with another great topic for Saturday's special, and we would have a blast on that day again. So just keep watching and keep encouraging your daughters to come up and build a world for herself. We wow women, we are to come up to the victory. This is for victory, and this is what Mr. Ash Mufareh loves doing and showing us. So thank you so much, everyone,
for joining us. And those who are watching us live on YouTube, do like, comment, and subscribe, and let us know what else we can implement on We Wow Women sessions so that we can at least bring a difference to the women of tomorrow. Thank you so much. Till next Saturday, see you and take care of your health. क्योंकि health है तो wealth है, health है तो सब कुछ है. See you. Divina, thank you so much for joining us. Yvonne, thank you so much. Dr. Benny and everyone, thank you so much for joining us, and we love everyone. Thank you. Take care of yourself. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, my girls.